and default routes are, can we able to assign the routes? I will explain. Okay. Now, according to my task, it says also give a default route on route number 2 and route number 3 towards your route number 1. So let me go to your route number 2, configure terminal, IP route 0.0.0.0, आपकी default routing की practice हो जाएगी 0.0.0.0 and from R1 it will be 192, sorry 10.1.21.2. Is it clear? Sorry, it will be 1. 10.1.21.1. Done. Show IP route. The gateway of last resort is set to this thing. Alright. So let me move to route number 3. IP route 0.0.0.0. 0.0.0.0. Don't worry, 00 means 0. Okay. 10.1.13.1. Okay. Is it clear? This is your 10.1.13.1. If we want to go outside, इधर से ही बाहर जाएगा कहीं पर भी. Hit enter. Now, from route number 1, let's try to ping 8.8.8 with the source address of 10.1.1.1. Will it be able to go? Come on, will it be able to go? Yes. It won't go. Because I have to do NAT translations. I have to do some translations before it should go out. There's no translation rule right now. Is it fine? Come on, ladies. Okay. So my route number 1 is my edge router. I have to do the translations here. जो भी translations होंगी वो इसी router पे होंगी. So first of all, we want to do our dynamic NAT translation. Let me create a pool of IP here. Let the pool be 192.1.14.100 and its range is 192.1.14.200. Let's say I have purchased 100 IP addresses. Same scenario I'm taking, which I explained to you in the morning, but now we'll be doing the practicals. Okay? Is it fine? Yes. This is nothing but the range of my public IP addresses, which I have purchased from your ISP, your internet service provider, whether it be Airtel, Vodafone, Reliance, BSNL, anyone. Okay. Till now, I haven't done. I've done only the things which you did it yesterday and day before. यही सब किया था आपने, रिप को रन किया और कुछ भी नहीं किया अभी तक तो हमने, और डिफॉल्ट राउट देखना हमने कैसे किया. अब हम NAT करेंगे. Look, my router 1, this interface is able to ping my ISP, but this loopback is not able to ping my ISP. Why? Because these 10 are not allowed on this particular network. Because this is a private thing. It is, how can it be allowed on your public network? It is not allowed. So what we'll do now is, on router number 1, define a NAT pool with a range of 192.1.100 till 14.200. Okay. Let's go on to router number 1. Configure terminal. Please note down the commands now. IP NAT pool. The command is IP NAT pool. It is asking for the name of a pool you want to create. IP NAT pool. All the remote centers, you are requested to note down the command because this is very important. IP
NAT pool, it is asked, when I hit a question mark, it is asking for a word, pool name. Let my pool name is ABC. It's just a name, okay? Again, hit a question mark. It is asking from ABCD, start IP address. It should be starting from 192.1.14.100. उसके बाद again hit a question mark. It is asking for the end IP address. End IP address. End is at 192.1.14.200. Right, perfect. And the next is net mask. Subnet mask क्या होगा उसका? It will be 255.255.0. Any doubt in understanding this command? I have done nothing, but I have only created a NAT pool right now for my dynamic NAT translations. All right. Hit enter. Remote sentence, I think आप सबको clear हो रहा है? If you are feeling lost, please stop me in the middle. Okay, participants in NIT Chandigarh, is it clear to you all? Yes. IP NAT क्या करना है? एक पूल बनाना है. पूल का नाम क्या है? ABC नाम है. उस पूल के अंदर जो रेंज है IP एड्रेसेस की, ये रेंज है जिसका सबनेट मास्क ये है और कुछ नहीं. Now it says assign a standard ACL on router number 1 permitting entire 10 network. Standard ACL यूज करेंगे. आपकी जितना भी आपने कल तक किया सारा आज आपको क्लियर हो जाएगा. So I want to create a standard ACL. Access list. Standard ACL की रेंज कितनी होती है हमारी? 1 to 9. Perfect. Yes, perfect. Okay. Hit a question mark. What I want to say, I want to permit my entire 10 network, 10.0.0.0. If you remember, yesterday हम एक host की बात कर रहे थे. So at that particular time, I was using the host keyword, but this time I'm talking about the entire 10 network. So I have to use my wildcard mask. I guess some lady sitting over here asked me yesterday, why aren't we using the wildcard mask? Okay. So what will be the wildcard mask for this? 0.255.255.255. Okay. Hit a question mark. No, I don't want to create a log entry for it. Hit enter. मैंने क्या किया? पूल बनाया. पूल बनाने के बाद मैंने एक्सेस लिस्ट बनाई. जब मैंने एक्सेस लिस्ट बनाई तो हुआ क्या? अब मैं इस एक्सेस लिस्ट को उस नेट के साथ क्लब करूंगा कि नेट आप किसको करना है, उन सारे आईपी एड्रेसेस को आपको नेट करना है जो मेरे इस एक्सेस लिस्ट के अंदर परमिटेड है. आपको उन सबको नेट करना है whoever is permitted in this access list 1. इतना क्लियर है? रिमोट सेंटर्स, okay, they're not responding. Yes, तो sir. ये लेके चलते Clear, हैं. sir. It's clear to them. क्या किया? नेट पूल बनाया. पूल के बाद क्या किया? एक्सेस लिस्ट बनाई जिसमें सारे 10 नेटवर्क को हमने अलाउ किया. अब हम एक कमांड लिखेंगे जिसमें क्या करेंगे? उस नेट पूल को क्लब करेंगे आपके एक्सेस लिस्ट के साथ. ये सिर्फ आपको उन्हीं नेटवर्क को परमिट करना है फॉर योर इंटरनेट विच आर परमिटेड इन योर दैट पर्टिकुलर एक्सेस लिस्ट विच इज योर एक्सेस लिस्ट नंबर 1. सो प्लीज नोट डाउन द कमांड आईपी नेट करो. किसको करो? इनसाइड यूजर्स को नेट करो. ओके. हिट अ क्वेश्चन मार्क. इट इज आस्किंग फॉर अ सोर्स एड्रेस ट्रांसलेशन. यस, सोर्स आईपी नेट इनसाइड करो. सोर्स क्या होना चाहिए आपका? सोर्स होने चाहिए लिस्ट का. किसको आपने अलाउ करना है? लिस्ट 1 को. आपने लिस्ट 1 बनाई यहाँ पे एक्सेस लिस्ट. उस लिस्ट 1 को आपको अलाउ करना है. ओके, अलाउ तो करना है पर आपको आईपी एड्रेसेस कहां से उठाने हैं? आपको आईपी एड्रेसेस उठाने हैं पूल में से. पूल कौन सा है? पूल इज योर एबीसी. इज दिस कमांड क्लियर टू यू ऑल? आईपी नेट करो. किसको करो? इनसाइड को करो. सोर्स क्या होगा? सोर्स होगा आपकी जो नेटवर्क परमिटेड है इन योर एक्सेस लिस्ट 1. ओके, परमिट तो करना है बट आईपीस कहां से उठाने हैं? आईपीस उठाने हैं पूल में से.
पूल कौन सा है? एबीसी, और उस पूल के अंदर रेंज ये है 100 to 200. इज इट फाइन? हिट एंटर. ओके, मैंने आपको बताया था इफ यू वांट टू गो फॉर नेट, आपको अपने इंटरफेसेस को इनसाइड और आउटसाइड के बारे में बताना होगा. These two interfaces F1/0 and on route number 1 and F1/1 is your inside. This is inside your company and this is exposed to your outside network S2/0. So यहाँ पर हम command run करेंगे on route number 1 interface F1/0. Oops, there's no 1/0. Interface F1/1, which is this interface, IP NAT inside. Please note it down. The commands are very important. I guess whole netting is very important. IP NAT करना है, किसको करना है? इनसाइड वालों को करना है. और इनसाइड का इंटरफेस कौन सा है? दो इंटरफेसेस है. हिट एंटर. थोड़ा टाइम लेता है. इंटरफेस F1/0 को भी करना है. F1/0 IP NAT inside again. Hit enter. Interface S2/0. This will be IP NAT outside. This will be IP NAT outside because this is an outside interface. IP NAT outside. अभी तक क्लियर हुआ सभी को? इस चीज ने मेरे NAT को enable कर दिया. Look at here. This is a command show running configuration section NAT. This will show me कि मैंने अभी तक क्या क्या चीज रन करी है NAT के अंदर. Enter. It is saying मैंने NAT दो इंटरफेसेस को NAT इनसाइड किया है, एक को आउटसाइड किया है. एक मैंने पूल बनाया है और उस पूल को मैंने असाइन किया आपके NAT इनसाइड यूजर्स को. ओके, शो रन okay, I haven't put the section keyword. मैंने क्या किया? Access list 1 permit entire 10 network. Okay, so now let's try. Earlier I was not able to ping my 8 network. Okay, so let's try to ping 8.8.8.8 with a source of 10.2.2.2. Will it work? Perfect. Is it going now? This is going. Look at the routing table of your route number 2. I'm not having any route for your 8 network, but still it is reachable. Still it is pingable. Why? Thanks to your netting. अब now let me check. वो गया तो गया, but router number 1 पे उसके ऊपर क्या प्रोसेस हुआ? The command is show IP NAT translations. Show IP NAT translations. Hit enter. Now this command is very important. Look at this. Inside local कौन था मेरा? Inside का जो local था that was 10.2.2.2. जब आउटसाइड ग्लोबल गया तो उसको कौन सा आईपी एड्रेस मिला? 192.1.14.100. इंटरेस्टिंग और नॉट? सॉरी, हाँ, दिस इज अ पोर्ट नंबर. इसको रैंडम असाइन हुआ होगा. ओके, दिस इज एंड द प्रोटोकॉल इज योर ICMP. इंटरेस्टिंग और नॉट? लुक, पिंग मैंने किसको किया? 8 को पिंग किया था. ग्लोबल आउटसाइड कौन था? Global outside here 8.8.8.8. Outside local was भी this the same, but inside कौन था? मैंने 10.2.2.2 से उसे पिंग किया था. किसको पिंग किया था? मैंने तो 8 को पिंग किया था. बट जब ये बाहर गया, बाहर कैसे गया? 192.1.14.100.
इंटरेस्टिंग और नॉट? सो अब एक काम करते हैं, आईएसपी पे मैं काम करता हूँ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल लाइन VTY 0 to 4 नो लॉगिन। मीन्स कल हम लॉगिन के लिए पासवर्ड सेट कर रहे थे, इस पे टेलनेट लेकर देखते हैं फ्रॉम योर राउटर नंबर 3। टेलनेट करो, किसको करो? 8.8.8.8 को। ओके, किससे करो? सोर्स इंटरफेस लूप बैक 1। टेलनेट करना है आपके 8 को। सी इट इज ओपन नाउ, ओपन हो गया। टेलनेट सेशन लिया मैंने आपके डीएनएस सर्वर का जो इंटरनेट पे अवेलेबल है। Now let me go to your router number 1 and see the translations again. Show IP NAT translation is the command. Hit enter. Can you see? 10.3.3.3 inside local. कहां पर गया? एक वेल डिफाइंड पोर्ट पे गया। 8.8.8 पोर्ट इज 23 ग्लोबल। कहां से गया? 192.1.14.101 नेक्स्ट आईपी एड्रेस इसे पूल में से मिला एंड विद द रैंडम सोर्स पोर्ट नंबर to a well-defined port number. Interesting or not? And this is your TCP based. ISP से आएगा। अपने आप देखो ना, हमने ISP पे कोई राउट नहीं दिया हमने। हाँ, ये ट्रांसलेशन में आ रहा है ना। इनसाइड लोकल कौन था? इनसाइड लोकल आपका था ये वाला इनसाइड लोकल था। विल डू इट आउटसाइड से भी हम अंदर आएंगे। ओके, एक काम और करते हैं, लेट्स मूव टू योर राउटर नंबर 2। राउटर नंबर 2 से भी हम टेलनेट लेते हैं। टेलनेट किसका लेते हैं? 4.4.4.4 का। सोर्स लूपबैक क्या लेते हैं इसका? इंटरफेस लूपबैक 1। मतलब राउटर 2 के लूपबैक से now I'll be taking the telnet of 4.4.4.4 which is again present on your ISP. Hit enter. Open. Come on, look at here. It's open. Interesting or not? Now see the NAT translation. Show IP NAT translation is the command. See 4.4.4.4 23 IP से कौन सा मिला? 100 मिला। 100 क्यों मिला? क्योंकि जो पहले पिंग के लिए 100 किया था वो उसने अपने टेबल में से थोड़ी देर बाद निकाल दिया था, आइडियल हो गया था। एक काम करते हैं, यहां से भी पिंग करते हैं। टेलनेट कीजिए, किसको कीजिए? ओके, यहां से तो नहीं कर सकते। पिंग करते हैं, यहां से पिंग कीजिए 4.4.4.4 को। सोर्स क्या होगा आपका? 10.1.1.1। ओके, पिंगेबल। सी द नेट ट्रांसलेशन अगेन। ICMP 102 मिला इसे। इनसाइड लोकल कौन है? 1.1.1। आउट इनसाइड ग्लोबल कौन है? 192.1.14.102। पूल में से आईपी एड्रेसेस ये उठा रहा है। दिस इज डायनामिक नेटिंग, अपने आप उठा रहा है, इसे हमने कोई असाइन नहीं किया। इज इट क्लियर? ओके, यहां से हम बाहर आते हैं, एग्जिट। I hope dynamic NAT is clear to everyone. Okay. To clear the translation, it is clear IP NAT translations star. Okay. मैंने सारे NAT translations को clear किया. Show IP NAT translations. Hit enter. It is empty now. Okay, our dynamic NAT is done now. Now let's move to PAT first, or your NAT overload. For that, मैंने command में यहाँ पे इसमें अपने task में बनाया है। First of all, clear your dynamic NAT. Dynamic NAT को clear करते हैं, patting करते हैं. Okay, show run section NAT. Hit enter. It will show you the commands. Configuration terminal. नो करना है मुझे। नो किसे करना है? इसको मना करना है मुझे। ओके, नो करना है मुझे आपके इसको भी मैं मना कर रहा हूं। आई डोंट नीड दिस।
I don't need any translation now. Is it fine? Hit enter. I've already hit the enter. Okay. Show run section NAT. See, इस पे सिर्फ इनसाइड आउटसाइड बताया गया अभी तक और कुछ भी नहीं है. इनको रहने देते हैं. मुझे क्या करना है? नेक्स्ट टास्क इज टू परफॉर्म पैट. कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल IP NAT source this is the command. IP NAT करो, किसको करो? इनसाइड वालों को करो. सोर्स लिस्ट कौन सी है? अब ये पूछा इंटरफेस, कौन से इंटरफेस को आप पैट करना चाहते हो? मैं कह रहा हूं कि मेरा ये जो आउटसाइड इंटरफेस है, दिस इंटरफेस 192.1.14.1, इस इंटरफेस को आपने पैट करना, मतलब नेट ओवरलोड करना है कि आप कोई भी बाहर जाएगा, देयर इज नो पूल एज सच, यू हैव टू गो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इंटरफेस. देयर इज नो पूल नाउ. सी, पहले ही मैंने पूल को नो किया ऊपर. आपने देखा? आपने मैंने यहाँ पर किया नो IP NAT pool. I don't want any pool. Go back. I don't need any pool. I hope आप सबको इंटरेस्टिंग लग रहा है. इससे सिंपल वे में नहीं समझा सकता. सॉरी. IP NAT इनसाइड किसको करो? इनसाइड यूजर्स को करो. तो किनको करो? जो आपके एक्सेस लिस्ट के अंदर परमिटेड है. अब इसमें पूल तो मेरे पास है ही नहीं. इफ यू रिमेंबर अर्लियर आई वाज यूजिंग पूल व्हेन आई हैड माय पूल विद मी, बट अब तो पूल ही नहीं है. सो आई हैव सेट इंटरफेस. कौन से इंटरफेस को करना है? S2/0 आई गेस. 2/0. यहाँ पे नीचे भी interface is S2/0. Main command, which is your overload command. Overload. इसी को overload करना है हमने. Please note down the full command now. IP NAT inside source list 1. Interface S2/0 because this is my interface present on my outside interface of the router. और इसको मुझे ओवरलोड करना. Okay, so back to work now. Okay, I hope you all have noted down the command on your route number 1. Net overload करना है हमें. क्या करना है? Overload. Hit enter. Simple. Easy or not? Okay, let me try to take telnet session of 4.4.4, which is present at your source from your source interface loopback 1. R2 के loopback से मैं ISP पे कोई नेटवर्क है 4, उसका मैं telnet session लेने की कोशिश करता हूँ. Open. Can you see? Let me try to ping 8.8.8.8 with the source of 10.3.3.3, which is nothing but the loopback of your router number 3. Hit enter. It's going. Is it working fine?
Okay, again use the command show IP NAT translations. Can you see? एक ही IP यूज हो रहा है. इनसाइड से कौन सा है 10.2.2.2. एक रैंडम पोर्ट नंबर से गया, कहां पे गया 4.4.4.4 पे गया. एक वेल डिफाइंड पोर्ट नंबर विच इज योर टेलनेट उस पर गया. कहां से गया 192.1.14.1 और एक सोर्स रैंडम सोर्स कोड नंबर था. जब आईसीएमपी किया पिंग भी गया बट 192.1.14.1 से गया. दिस इज योर नेट ओवरलोड और योर पैट. ओनली वन सिंगल आईपी एड्रेस इज बीइंग यूज्ड which is your present at your outside interface. Can you see? Now let me try to take the telnet session from router number 3. Telnet karo 4.4.4.4 source interface loop back 1 open. Again see the net translations. Can you see? एक ही आईपी है बट पोर्ट नंबर इज डिफरेंट. दिस इज द मेन पॉइंट हियर. डिफरेंट पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन. डिफरेंट पोर्ट्स है. यहां पे कोई और पोर्ट है, यहां पर कोई और पोर्ट है आपका. और कहां जा रही है वेल डिफाइंड पोर्ट नंबर विच इज योर 23. आउटसाइड लोकल कौन है 4.4. इनसाइड का लोकल कौन है 10.2.2.2. पर जब ये बाहर जाएगा तो यहां से बाहर जाएगा. ये मैं आपको थोड़ा और क्लियर करता हूं. रिमोट लोकेशंस. एम आई ऑडिबल टू यू? Yes, sir, you are audible. ओके. लोग हो क्या रहा है ये 10 वाला जो जब यहां से गया यहां पहुंचा. इट रीच सम ऑन राउटर नंबर 1. यहां पे आईपी था 192.1.14.1. ओके. आगे इंटरनेट पर ये गया. जब वापस आया यहां तक वापस आया और आगे रिप्लाई इस बंदे को मिला गया. सिमिलरली ये यहां से चला, यहां जाकर रुक गया, यहां से वापस आगे ये गया. इनमें पोर्ट नंबर का हेरफेर था थोड़ा. वापस आया यहां पर, इसको वापस को यहां पर. डायरेक्टली कनेक्टेड. हाँ पोर्ट नंबर उसके पास सेव रहते हैं ना. अदरवाइज हाउ इट विल बी पॉसिबल. उसको कैसे पता कि कौन से पोर्ट से आ रहा है. हाँ रैंडम जनरेट होगा बट वो ध्यान में रखता है ना कौन से पोर्ट नंबर के लिए. अब जैसे आप google.com खोलते हो और आप facebook.com पैरेलली खोलते हो. ऐसा तो नहीं है ना कि गूगल का डेटा आपके फेसबुक पे आ रहा है और फेसबुक का डेटा आपके गूगल पे जा रहा है. सेशन क्रिएट होता है ना. हाँ पोर्ट नंबर भी डिफरेंट. पोर्ट अगर सेम भी हो जाएगा पर दैट विल बी 1 मिलीसेकंड बिहाइंड. लेट्स से इसने एक पोर्ट नंबर जनरेट किया व्हिच वाज योर 3000. इसने भी 3000 पोर्ट नंबर जनरेट किया बट ये 3000 उससे 1 मिलीसेकंड पहले पहुंचेगा. आपका राउटर 1 बाय 1 पैकेट्स को प्रोसेस करता है. जब यहां से 3000 आएगा, oh sorry 3000 is already occupied. You look for some another port number. Okay, I'll come with 3001. Okay, you are allowed. Go. Port address translations. Smaller companies में आपके port address translation नहीं होता. Depends on the time. Depends on the time. Yes. Okay. We have done dynamic NAT. We have done NAT overload, which is nothing but your PAT. Now let's come to your static NAT. मतलब मैं IPs को बाइंड कर दूंगा. एक काम करते हैं उसके लिए मैंने टास्क में क्या लिखा है. On allow ISP to access R2 using telnet with help of an ACL. What I am saying, allow ISP to access your router number 2. उसके telnet सेशन लेना चाहता है मेरा ISP using access control list. कुछ पॉलिसी डिप्लॉय करनी पड़ेगी तभी राउटर उसके ऊपर भेजेगा उसे. Otherwise you can see the route at the ISP. There are access no routes. Show IP route. It don't know what is telnet network. Try to ping 10.2.2.2. Not pingable.
It is not having the route. Okay, so how अगर उसमें route नहीं है तो ping कैसे करेगा पहली बात तो. Okay, let me go to my router number 2. इसके ऊपर एग्जिट करते हैं, यहाँ से एग्जिट किया, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, लाइन VTY 0 to 4, लॉगिन पासवर्ड रख देते हैं. चलो, लेट द पासवर्ड इज CCNA and your enable password is also CCNA. Okay, let's say इस पर्टिकुलर लोकेशन पे मेरा एक वेब सर्वर है, मेरी कंपनी की वेबसाइट है जो मैंने अपने इंटरनल नेटवर्क पे एक सर्वर रखा है, उसी पे होस्ट की हुई है. ISP से मैं ये तो चाहूंगा ना कि मेरी प्रेजेंस तो होनी चाहिए मेरी वेबसाइट की लोगों को. So website is somewhere here, my web server is here. So let me start my web server here. IP HTTP server is the command for that. Hit enter. Okay, and on router number 1, let me clear all the translations. Clear IP NAT translations, start, enter. This was not having any translation. ये तो R2 है, गलती से कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं. Okay, it is empty now. मुझे क्या करना है? Statically bind करना है. Okay, configuration terminal, IP NAT inside source. Now source is my static. पहले अभी तक हम list use कर रहे थे, but now source is static. Okay, enter. It is asking me inside local IP address. Inside का local IP address कौन सा होना चाहिए? मैं कहता हूँ 10.2.2.2. ये तो मेरे पास अवेलेबल है, which is available at my router number 2, and it's a loopback there. 10.2.2.2. Now it will ask me इसको कौन से ग्लोबल आईपी के साथ मैप करना है. लेट्स से 192.1.14. लेट इट बी 161. मेरे पास मैंने कहा 161 एक आईपी है, उसके साथ आपको मैप करना है. क्वेश्चन मार्क, हिट एंटर. ओके, IP NAT inside source again static 10.3.3.3. इसको मैं चाहता हूं 192.1.14.171. मैंने क्या किया है अभी तक, इफ यू आर नॉट एबल टू गेट, इस 10.2.2 को मैंने मैप किया है 192.1.14.161 से. स्टैटिकली इसको ही ट्रांसलेट करेगा ये. और जो आपका यहाँ पे वेब सर्वर है which is at present at your 10.3.3.3, इसको मैंने मैप किया है 171 के साथ. Let me hit enter. Alright. अब कहते हैं कि your ISP should be allowed to come inside for the telnet to take the telnet session of this particular place and to view your website here. उसके लिए I have to use my access control list. क्या यूज करना है? Access control list. आप सबको तो एक्सेस नहीं हो गया अभी? आपको तो एक्सेस नहीं हुआ? क्लियर और ऑल क्लियर? ऑल क्लियर? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. इसमें आपने सारे टॉपिक्स अभी तक जो किए हैं वो सारे मैंने कवर कर दिए. Okay, your access lists are clear, your netting is clear, your routing is clear, static routing is clear, default हमने दिया उसमें. Okay, think कितनी मेहनत लगी होगी सुबह टास्क को बनाने में. Okay, I have to define for the particular services. मुझे टेलनेट को ओपन करना है और आपके www which is your HTTP उसको ओपन करना है मुझे. So for that I have to use my extended ACL because standard ACL match
only on your source address, not on your destination, not on your protocol, not on your port number. So for that, I'll be using extended ACLs. Access list 101 permit TCP, hit a question mark, from any source. Outside से कोई भी source है. Look, this is important. Please, जो यहाँ पे configuration करें, you can do it later, but this is very important. Access list 101 permit TCP from any source to which destination? To host of 10.2.2.2, which is equal to your port number 23 or your telnet. Clear हुआ इतना या नहीं clear हुआ? Please ask me the questions. I am saying access list 101 permit करना है, किसको permit करना है? पूरे TCP प्रोटोकॉल को permit करना है. कौन से सोर्स के लिए परमिट करना है? एनी सोर्स, किसी भी सोर्स से आए, और कौन से डेस्टिनेशन के लिए परमिट करना है? सिर्फ 10.2.2.2 के लिए परमिट करना है. 10.2.2 पे आई वांट हिम टू टेक द टेलनेट, सो इक्वल टू टेलनेट, और यू कैन राइट 23 over here as well. Hit enter. Now access list 101 permit TCP from any source to a host of 10.3.3.3 equal to your www http. यहाँ पे मेरा वेब सर्वर है, remember 10.3.3.3 10.2.2.2, इसका सिर्फ टेलनेट लेना चाहिए और इसका http सेशन लेना चाहिए. इसको ऊपर लेकर जाए, hit enter. Okay, I have created the ACL but I haven't applied it yet. Apply कहाँ पर करेंगे? Interface S2/0 IP access group 101 inside. यहां से ही कोई अंदर जा पाएगा? नेटवर्क के इसको एक्सेस करना चाहते हो तो कहां से जाएगा? यहीं से जाएगा होकर. मानते हो कि नहीं मानते हो? तो यहीं पे उसको इनसाइड को उसको परमिट करना पड़ेगा. ओके, नींद तो नहीं आ रही किसी को? एंटर. डन. Now let me see the NAT translations. Show IP NAT translations. Hit enter. Look, अभी तक हमने कुछ ऐसे ट्रांसलेट नहीं किया. अभी 10 मिनट हुआ. बट ये जो ट्रांसलेशंस हैं मैंने स्टैटिकली साइन करी है, तो दे विल बी ऑलवेज प्रेजेंट इन योर ट्रांसलेशन टेबल. इनसाइड लोकल कौन है? 10.2.2.2, और उसको मैंने किससे मैप किया है? 192.1.14.161 से. 10.3.3.3 है, इसको मैप किया है 192.1.14.171. Can you see? Stop yawning, man. Okay. अब एक काम करते हैं. Let me go to my ISP. This is my ISP. I want to take a telnet session. किसका telnet लेना है? 192.1.14.161. Because your ISP doesn't know about the telnet network. आपने जो पब्लिक IP से मैप किया उसे वही उसको अंदर लेकर जाएगा in your company network. Source loop interface loopback 1. Okay. It is down. Why it is down? Okay, let's try to. Sorry. देख लेते हैं. I don't think जाना तो चाहिए. Let me try to telnet 171 with 80. Why it is down?
ऐसा होता है जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हो तो ऐसी चीजें होती है। अभी सुबह से मैंने किया था तो इट वाज वर्किंग फाइन। ओके, लेट्स ट्राई टू फिगर इट आउट, क्यों गलती हो रही है। एक काम करते हैं, यहाँ से पिंग करते हैं 8.8.8.8 with the source of on route number 3. Why it is not going? अभी तो पिंग भी नहीं जा रहा। एनी आइडिया क्यों नहीं जा रहा? ACL का ही दिक्कत हो सकती है। Okay, I think we haven't applied the ACL on the interface, or we have applied तो किया हमने IPXS group in 101. Let me try from route number 2 to ping 8.8.8. Thing is going. Okay, look here. मैंने उसे पिंग किया, मैंने उसे स्टैटिकली मैप किया हुआ था। पिंग कहां से किया? 192.1.14.161 से। Why 161? बिकॉज इसको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मैप किया, असाइन किया हुआ था। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ क्लियर आईपी नेट ट्रांसलेशन स्टार और दोबारा देखते हैं, ये दोनों आपकी फिर भी रहेंगी बिकॉज ये स्टैटिकली हमने दी है, और ये जो चीज थी ये हट गई यहाँ से। So let's try to create the ACL again. शायद कोई ACL में गलती होगी। यार 2 से काम करते हैं, टेलनेट लेके देखते हैं। टेलनेट 4.4.4.4 सोर्स इंटरफेस लूप बैक 1 ओपन तो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आई गेस ACL में हमने कहीं पे कोई गलती करी। शो आईपी नेट ट्रांसलेशन सी, ये आईपी एड्रेस इसे लेकर जा रहा है बाहर। लोकल इनसाइड का एड्रेस कौन सा है? 10.3.3.3। कहां पे जा रहा है? एक वेल डिफाइंड पोर्ट 4.4.4.4 टेलनेट। ओके, एग्जिट। नाउ लेट मी ट्राई टू क्रिएट ACLs अगेन। पता नहीं क्या गलती हुई लास्ट टाइम। एक्सेस लिस्ट 110, let it be 110. It says I want to permit क्या करना है? TCP परमिट करना है मुझे। TCP from any source to a particular destination 10.2.2.2 hit a question mark equal to which port number? Equal to 23
access list 110 permit TCP from any source to this particular destination 10.3.3.3 equal to sorry I गलती पता लगी I think यहाँ पर हम let me try 10.3.3.3 equal to just let me try interface S2/0 IP access group 110 inside. Now let me try it again. नहीं होता तो मैं समझिए इसमें क्या हो सकता है. Let me go to my ISP. Okay, I got the point. कहाँ पे गलती हो रही है? नहीं यहाँ पे हम वो पब्लिक आईपी देंगे ना, हम यहाँ पे प्राइवेट आईपी दे देंगे यहाँ पे एक्सेस लिस्ट में. आई थिंक यही इसका लास्ट चांस लग रहा है, मेरे को उसके बाद नहीं पता क्या करना. ओके नहीं लेट मी ट्राई. होगा, बिल्कुल होगा. मैंने सुबह प्रैक्टिस किया एक बार से. ये चीजें होती हैं जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं. Access list 110 permit TCP from any source to this particular destination. Host कौन सा होगा? 191.14.1.14.161 equal to 23. Access list 110 permit TCP from any source to this particular destination 192.1.41 हो गया. सर आप पहले नहीं बोलते ना. I'm going very slow. Leave me. Okay, this is the last chance. नहीं चला इसके बाद I have to figure it out. I have to figure it out. अगर अब भी नहीं चला then I have to say. So let's do it. और I did it in the morning. उस वक्त तो ये बिल्कुल सही चल रहा था. हो गया. Look at here. Telnet किया 192.1.14.161 को. Who was your 14.161? 10.2.2.2. I don't know पहले क्या गलती हुई थी. CCNA is your password. Enable CCNA. I am inside. You are router number 2 from the ISP. Don't ask me क्या हुआ because मुझे भी पता नहीं. आपको क्लियर हुआ कि मैं क्या समझाना चाह रहा था आपको? These are your bizarre do happen जब आप presentation करते हो. Remote centers, is it clear to you? From my ISP, I have taken the telnet session of your router number 2. I show IP NAT translations. Look at here. Who is my inside global? This is my global address. Inside local कहाँ पे लेके जा रहा है मुझे? 10.2.2.2. यहाँ पे मैंने telnet किया उसे. बाहर से कहाँ से आया? इस एड्रेस से आया. एक जो आपका रैंडम सोर्स पोर्ट नंबर था वहां से आया है. Is it clear? Yes. Okay, let's try कि वो HTTP क्यों नहीं ले पा रहा? Because आप कहोगे कल भी HTTP नहीं हो पाया, आज भी नहीं हो पाया. Let me go to your. यहाँ से exit करता हूँ मैं ISP से. This is my ISP. This is my ISP. Exit किया.
let me try to telnet 192.1.14.171 किस पोर्ट पे 80 पे नो कमेंट सीरियसली नो कमेंट इस पे मुझे नहीं पता अगर एक पे जा रहा है तो दूसरे पे क्यों नहीं जा रहा मुझे आइडिया नहीं आपको ये क्लियर हो गया हमने क्या आईएसपी से हम चले यहाँ से इस एड्रेस पे टेलनेट करना सर हेलो एक सेकंड एक काम कर एक सेकंड यस मैम हेलो यस मैम यू आर ऑडिबल यस सर जो आपने जो एक्सेस लिस्ट 101 में आपने दिया है परमिट करने के लिए लास्ट में इक्वल टू www और आप यहाँ पर आप HTTP का आप पोर्ट नंबर आप यहाँ पर दे रहे हैं तो इसीलिए शायद रॉन्ग हो रहा है नहीं मैम उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है 80 और your www is one and the same thing IP let me try IP HTTP सर्वर इस पे ऑन किया था हमने IP HTTP सर्वर नहीं किया था let's try because और तो मुझे कोई रीजन समझ नहीं आता प्रिंट भी नहीं होगा ना मैंने सिर्फ उस सर्विस के लिए तो ओपन किए हमसे सिर्फ HTTP सर्विस के लिए ओपन किए है So shall we move forward और यही पे से खत्म करें बिकॉज मुझे नहीं समझ आ रहा अगर एक सर्विस के लिए जा रहा दूसरी सर्विस के लिए क्यों नहीं जा रहा because I did it in the morning बिल्कुल it was working perfectly fine ओके कल हम क्या कर रहे थे टेलनेट सेशन लेने के लिए 192 डॉट आगे सिर्फ 80 को एंटर करना है जैसे आप 80 लगाएंगे इट मींस गो फॉर द HTTP सर्विस कल जब शाम में मैं करवा रहा था तो नहीं हो पा रहा मैं कमांड भूल गया मैं कल क्या कर रहा था टेलनेट कर रहा था 192.1.14. this address with the source interface or something कल हम कुछ इस तरह से कर रहे थे तो वो इनवैलिड हमें दिखा रहा था इफ यू रिमेंबर ओके so let me save this configuration ओके रिमोट सेंटर्स एनी डाउट सिर्फ लास्ट वाले पॉइंट को छोड़ के बिकॉज इट्स नॉट इवन क्लियर टू मी बिकॉज इट इज allowing for one service which is your telnet but is not giving the access for your HTTP. I don't know why. Our configuration is fine. We haven't committed any mistake in the configuration. So if you have any doubts related to NAT, PAT, static NAT, please ask me now. आपने NAT देखा, dynamic NAT देखा, automatically IP addresses pick करता है. PAT देखा, single IP address है, different port numbers होते हैं. Static NAT देखा, IPs को हम bind कर देते हैं. फिर आपकी कंपनी के अंदर कोई वेब सर्वर है या मेल कोई टेलनेट लेना चाहता है आउटसाइड से आपने थ्रू एक्सेस लिस्ट उसको यहाँ पर अलाउ किया मेरे यहाँ से नेटवर्क यहाँ का टेलनेट ले पा रहा था जबकि आई वाज नॉट इवन हैविंग द राउट्स एट माय ISP डोंट नो व्हाट इज अ टेलनेट नेटवर्क बट स्टिल इट वाज एबल टू टेलनेट हियर आई डोंट नो अबाउट दिस HTTP यहाँ जा रहा है तो यहाँ क्यों नहीं जा रहा है होता है कई बार ऐसा Okay, any doubts? Remote centers, am I clear? Okay sir, clear sir. Clear? Okay, what about the other colleges and universities? Come on. So, बाकी कहाँ पे? I want to see कहाँ पे? Okay, I hope you all enjoyed the session. Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you very much. From now onwards, Mr. From Unit Solution Mocha will be
completing the session with the switching part. We have completed entire routing. जो CCNA में होता है. We did your क्या कहते हैं default routing हमने किया, static routing किया, CIGRP आपका रह गया. We covered RIP, we covered OSPF, we covered ACL, we covered your netting, all the type of netting जितने भी available है. Now it's time to move to your switching part. So Mr. Prem Gupta will be taking the switching now. Hello. Hello. Yes, sir. Hello, sir. This is Vijay Kumar Vishwakarma from AKS University. Yes, sir. Hello, Mr. Saurabh Kaushal. Yes, sir. Yes, sir. Am I audible, sir? Yes, sir, you are audible. Please answer the question. Sir, I want to give a compliment that this is the one of the interesting session till now about NAT and PAT. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you. Okay. अब आपके अच्छे दिन आने वाले मुझे क्या आपके सारा टॉपिक सारे तो अच्छे दिन ही होंगे but believe me that is very difficult but मैंने जितनी कहानियां डाल के समझा सकता था आपको समझाया. मैं एक ऑर्डर कर दूंगा. Okay, thank you very much. I hope you enjoyed. Okay, Thank you, sir. if you want to next. Okay. 5 मिनट में से पानी को नहीं पीना तो फिर आप नहीं इसमें तो कुछ स्पेस नहीं.